k, it is equal to some pre-exponential factor. There is some constant because he got relationship between k and t, and in order to establish that relationship, he has to put a proportionality constant, that is a. Ea to the power minus Ea upon RT. Now, if you see, this is very much similar to the collision theory equation also. है ना? So it is quite similar. Here we have activation energy in negative. There also we had activation energy in the negative and the power. Now, this is the Arrhenius equation, but we don't really use, we can use this particular equation also. There have been a few questions from this particular equation, but we use a different form for the numericals. ठीक है? ये एक सवाल है आपके पास. Please try this question. This is directly from the Arrhenius equation. इसको आप please एक बार Arrhenius equation इसको लिख लीजिएगा. K is equal to a e to the power minus Ea upon RT. And then write this question. Try this question. Write this down. I will explain how to do it. Just raise your hand once you're done writing the question, then I will explain it. ठीक है. Now, according to the Arrhenius equation, k is equal to a to the power minus Ea upon RT, है ना? तो यहाँ पे आपके पास what we have? K, it is equal to a into e to the power minus Ea upon RT, and they have given some values. आपको क्या दिया हुआ है? K is equal to 2.5 into 10 to the power 14 second inverse e to the power minus 25,000 k upon t. ठीक है? Now, if I compare these two expressions or equations, what I will get? A is equal to this constant e to the power minus Ea upon R. This minus Ea upon RT is this value. है ना? तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? माइनस Ea upon RT is equal to minus 25,000 k divided by temperature. So temperature and temperature will cancel each other out, और आपके पास Ea जो हो जाएगा, and minus minus sign will also cancel each other out. Ea will be equal to 25,000 into the gas constant R. The value of R is what? 8.314. Once you multiply these two numbers, you will get the Ea. Make sense? Yes or no? Please tell me, guys. Yes. Calculate कर लीजिए जरा.
Once you're done, please send the answer on the Zoom chat. What is the value? उसके बाद I think you can calculate this. You can calculate the rate constant. You have been given the half-life period, है ना? So I hope you remember the formula from the last class. What is the formula for half-life? When you have first order reaction दिया हुआ है. So you know what is the relationship between half-life and the first order. Yes, I think Sophia, that is correct. Souls per mole. Krishna Priya. Yeah, joules per mole. Okay, that's fine. Correct. Rate constant भी निकाल लीजिए. What will be the rate constant if the half-life period has been given? Yeah, that is correct, Krishna Priya. So this will be 207850 joules per mole. And for T half, or rather K, actually we have this here, no? It will be 2.31 into 10 to the power minus 3. And it will be in minute inverse because ये minute में दिया हुआ है. ठीक है? I hope you have written this down. There are a few remarks regarding EA. Sorry, regarding the Arrhenius equation. That is, A and EA are characteristics of a reaction, meaning they are not affected by the temperature. Arrhenius factor and the activation energy, they depend on each and every reaction will have different activation energy and it will have different pre-exponential factor. The pre-exponential factor gives an idea about the number of effective collision per unit time. And that is why in the previous question, this was having a second inverse unit. ठीक है? यहाँ पर unit है second. That means this many effective collisions were happening per second. And very similar thing you can find on the collision theory also. Collision theory is what? It is probability multiplied by the number of collisions. Probability into the number of collision will give you what? It will give you the effective collision. तो P into Z AB जो है ना वही आपका pre exponential factor है Arrhenius equation में. ठीक है? चलिए. Next is the graph for Arrhenius equation. We have to alter a few things right now. So in order to take the graph, we have to have K that is equal to A into A to the power minus A upon RT. If I take natural log on both the sides, I will get ln K and ln A into e to the power minus E upon RT. Now, when I take ln, I can use the rules of log that log A into B is equal to log A plus log B. That is why ln A into minus E to the power E to the power minus E upon RT will be equal to ln A plus ln E to the power minus E upon RT. Then minus E upon RT will go down and we will get ln K is equal to ln A minus E upon RT ln E. Now, ln is what? It is natural log. That means क्या होता है? Log to the base E. So E
is the value and base is also e, so the power will be 1. So e to the power 1 will be equal to e, so that's why ln e is equal to 1. Now if I plug in the value, that is 2.303, I multiply it over here, I will get the log. So 2.303 log k is equal to 2.303 log a minus ea upon rt. ठीक है, अब उसके बाद I will divide by 2.303 also. So when I divide by 2.303 all of these values, I will get 2.303 by 2.303. This will cancel out. This will also cancel out. And यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 2.303 बच जाएगा. ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या हुआ, यहाँ पे there are two steps which I have included ऐसे. अभी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दैट ln को बस हमने चेंज किया लॉग में. ln को लॉग में चेंज करेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, e अपॉन rt विल बी एज इट इज बिकॉज वहां पे लॉग है नहीं. अब उसके बाद मल्टीप्लाई 2. इफ आई डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 2.303, यहाँ पे 2.303 आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा. इन द केस ऑफ log e and log a, the 2.303 will be cancelled. बट ea वाले टर्म में 2.303 सिर्फ डिनोमिनेटर, तो वो वहां पे वैसे ही रहेगा. So from here you can have two different expressions which will have similar graph, that is log k is equal to log a minus e upon rt, e upon 2.303 rt. और दूसरा ln के फॉर्म में है, in which we have ln k is equal to ln a minus e upon rt. So we can have a graph which is between log k or ln k versus 1 by t. 1 by t is going to be the same thing. 1 by t y x axis change नहीं होगा. Y axis में you can have ln k or log k, and if I plug in the y is equal to mx plus c format, then I will get a straight line that is having intercept on the y axis, a positive intercept on the y axis with a negative slope. तो जो यहाँ पे intercept होगा that will be ln a or log a, depending on what equation you are using. ठीक है, तो c हमारे पास log a है और ln a है ना. And the slope will be either minus e upon rt if you're using the ln form of the equation. If you're using the log form of the equation, it will be minus e upon 2.303 r. ठीक है, यहाँ पे this is the graph. I hope ये आपके notes में already होगा. I hope you have the notes also. And from here also you have a question. Please see this. ठीक है, देखिए जरा. Like you can directly answer this question also, but ये आपके पास ln k वर्सेस 1 by t का ग्राफ है. दिस आल्सो आस्क्ड इन वन ऑफ द पेपर्स. ठीक है, आई थिंक लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर का ही है. नाउ हियर दे आर आस्किंग द इंटरसेप्ट एंड द स्लोप ऑफ द ग्राफ्स आर. इंटरसेप्ट और स्लोप क्या क्या है यहाँ पे. तो जो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए, बहुत ही आसानी से आप आंसर कर सकती है इवन इफ यू डोंट नो द एक्चुअल ग्राफ. अगर आपको सिर्फ ग्राफ के बारे में आइडिया है ना, if you already know, if you only know that what how graph works, then also you can answer it. For example, ये आपको पता है कि ये डाउनवर्ड स्लोप है. डाउनवर्ड स्लोप जब होता है तो m जो होगा दैट विल बी नेगेटिव. स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा. नाउ द ओनली नेगेटिव स्लोप आर ऑन द ऑप्शन c and d. दैट मींस आइदर c इज करेक्ट और d इज करेक्ट. आइदर c इज करेक्ट और d इज करेक्ट. अब यहाँ पे अगर आप देखें, और दूसरा है उन्होंने स्लोप के बारे में तो हमने पता लगा लिया. स्लोप या तो माइनस ई अपॉन आर होगा या फिर माइनस ई होगा, है ना. वी डोंट नो द फॉर्मूला, एनीथिंग, कुछ नहीं पता हमें, है ना. वी आर जस्ट लुकिंग फ्रॉम द मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव. अब यहाँ पे है ln k, right? Now, if this particular y-axis is having values in terms of ln, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी that will also be something ln, some constant. ln some constant होगी value because the y-axis itself is what it is having ln in the y-axis. तो ln y-axis में कहाँ पे है? It is in the option number C, not in D. तो D ऑप्शन हो नहीं सकता है. The correct option is C. ठीक है, तो ये हमने बताया आपको कहां से. आप डायरेक्टली अगर ग्राफ याद है तब तो आपको ऐसे ही देख के पता चल जाएगा. बट इवन इफ यू डोंट रिमेंबर द ग्राफ, देन आल्सो यू कैन अप्लाई सम मैथमेटिकल नॉलेज अबाउट द ग्राफ्स एंड गेट द आंसर. ठीक है, प्लीज राइट दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को एक बार लिख लीजिए. ऑल इफ यू गॉट दिस, हाउ टू डू दिस टाइप ऑफ ग्राफ. अगर आपको फॉर्मूला वगैरह याद नहीं, इक्वेशन याद नहीं है तो यस और नो. यस असलान, कृष्ण प्रिया, सफिया. यस सर. ठीक है.
Raise your hand once you're done writing. Now, next important topic is Arrhenius equation at two different temperatures. इससे आपके पास न्यूमेरिकल्स आने की संभावना काफी ज्यादा है, ठीक है. सो दिस इज अ टॉपिक दैट यू कैन नॉट इग्नोर. यहाँ से आपके पास जो बड़े न्यूमेरिकल्स हैं 3 मार्क्स के 5 मार्क्स के इंडिविजुअल न्यूमेरिकल्स यहाँ से आ सकते हैं इवन इन द 4 मार्क्स सेक्टर. सी सो आरएनएस इक्वेशन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर में सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, जिससे डायरेक्ट एक सवाल आ सकता है, दैट ऑन एवरी 10 डिग्री or 10 Kelvin rise in temperature, the rate of reaction or rate constant, it will double. Now this is very generic form of statement. It is not true for all the chemical reaction, ठीक है, at every temperature. हर 10 डिग्री इंक्रीज में जरूरी नहीं है ऐसा, बट इट इज अ जनरल थिंग जिससे आप जनरलाइज कर सकते हैं. एवरेज इतना 10 डिग्री का इंक्रीज देखा जाता है. कहीं पे 8 हो सकता, कहीं पे 8 डिग्री में आ सकता है, कहीं पे 12 डिग्री में आ सकता है, बट इन जनरल for every 10 degree or 10 Kelvin increase in the temperature, the rate of reaction या फिर rate constant, because अगर rate constant double होगा तो rate of reaction और अपने आप ही double हो जाएगा, है ना. So rate of reaction or the rate constant it will double. Now this is one statement जिसको आप ध्यान रखेंगे. MCQ वगैरह में assertion reason वाले सवालों में ये चीज लिखी जा सकती है, ठीक है. So you have to remember this point also, that for every 10 degree there is a rise. For every 10 degree rise in temperature, the rate of reaction or the rate constant, it will double. अब दूसरा जो स्पेसिफिक है, at T1 and T2 for a reaction, ठीक है. हमारे पास दो टेम्परेचर दिए हुए, the values will be given and we have to formulate one equation जिसमें T1 से T2 टेम्परेचर जाने में क्या डिफरेंस आ रहा है उसके लिए. So for that we will write the expression of Arrhenius equation, log वाला expression for T1 temperature and T2 temperature. The only things which are going to change are the rate constant K1 and the rate constant will be K2 in the cases T1 and T2, because we are looking at one reaction only but different temperatures. When the reaction is same, the pre-exponential factor will be A, दोनों ही cases में only temperature is increasing, and the activation energy will also be constant, because both of these things, pre-exponential factor and the activation energy, they don't change with temperature. They are independent of temperature. That is why they will not change. What will change? At T1 temperature, the rate constant is K1. At T2 temperature, the rate constant is K2. Now, once we have got this 2, we will do 2 minus 1. जब आप 2 minus 1 करेंगे, ध्यान से देखते हैं, log K2 minus log K1, this is pretty much easy. Now, this whole thing is what is equal to the second expression. Log A minus EA upon 2.303 R T2 minus log A minus EA upon 2.303 R T1. So we have done equation 2 minus equation 1. Now, when I will open the brackets, so this bracket will open as it is, कोई change यहाँ पे नहीं होगा, but here we have negative. So log A, which is positive, will become negative, minus E upon 2.303 RT, RT1, which is negative, it will become positive, and you will have the next step that will look something like this. Now log A and log A will, इनको आप add करें, subtract करें तो 0 हो जाएगा. You can ignore this. Now we have log K2 upon K1 is equal to minus E upon 2.303 RT2, E upon 2.303 RT1. Next, you will rearrange T1 को आप इधर ले आए पॉजिटिव, उसके बाद नेगेटिव. So here we will get this value, E upon 2.303 R T1, E upon 2.303 R T2. Now we can see that E upon 2.303 R is common in both the cases. In both the terms, we will take that common and I will get 1 upon T1 minus 1 upon T2. When I will take the LCM for these two, it will be T1 into T2, and in the numerator here we will be having T2 and here we will be having T1. यहाँ पे आपके पास एक्सप्रेशन आ चुका है. Log K2 upon K1 is equal to EA upon 2.303 R T2 minus T1 divided by T1 into T2. Now 2.303 is a constant, R is also a constant, so it is better that we can multiply this two. आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू जो आएगी दैट इज 19.14, है ना. यहाँ पे आपकी नोटबुक में होगा ये चीज, ठीक है. अब ध्यान दीजिए जरा. सो ये आपकी वैल्यू जो है ना, इसको हम यहाँ पे भी लिख देते हैं.
यू प्लीज राइट दिस एक्सप्रेशन। एक बार आप नोट से अपने खुद से एक बार डिराइव कर लीजिएगा, तब आपके लिए ये चीज याद हो जाएगी। डेरिवेशन आता नहीं है जनरली, डेरिवेशन आता नहीं है। 2.303 R इज इक्वल टू 19.4, शायद 14, 19.14। सो दिस वैल्यू, आप इस वैल्यू याद कर लीजिएगा, तो आपको बार बार ये मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस के टाइम ही आप 19.14 याद कर लीजिए। ठीक है, प्लीज राइट दिस डाउन। एंड इस सवाल को भी लिख लीजिएगा जरा। राइट द क्वेश्चन ऑल्सो। Rate of chemical reaction doubles for an increase of 10K in absolute temperature from 298 Kelvin. Calculate E. अब यहाँ पे ना आप कुछ चीजें मिसिंग मिसिंग लगेंगी, बट यू डोंट हैव टू वरी। आई सी दैट ऑल ऑफ यू आर डन। सी, सो यहाँ पे सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि K1 K2 कुछ नहीं दिया हुआ है ना, एंड देर ओनली सेइंग देयर इज अ 10 इन केल्विन इंक्रीज। ठीक है, और दूसरा टेम्परेचर आपको दिया हुआ 298। ठीक है, सो थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा, बट इफ यू डू दीस टाइप ऑफ क्वेश्चन, तब एग्जाम में आप इन सारे सवालों को कर पाएंगे पहले ऐसे आपने अगर किया। अदरवाइज एग्जाम में सबसे पहली बार अगर ये सवाल देखेंगे तो आपको दिमाग ही चकरा जाएगा, 10 केल्विन से 298 केल्विन तक इंक्रीज कर दिया गया टेम्परेचर। बट दैट्स नॉट इट, राइट, दैट्स नॉट इट। क्या हुआ है यहाँ पे, the rate of chemical reaction doubles, and this doubling is happening not because of the change in concentration. This doubling is happening because of the doubling of the rate constant only, बिकॉज चेंज ऑफ कंसंट्रेशन की बात नहीं की। और एक चीज आप लोग देखिएगा यहाँ पे, सर यहाँ तो रेट है ही नहीं, यहाँ तो K2 K1 है। यस, इट इज K2 K1, बट व्हेन वी से द रेट ऑफ रिएक्शन इज डबलिंग बाय इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, दैट डबलिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन कैन ओनली बी एक्सप्लेन बाय डबलिंग ऑफ रेट कांस्टेंट। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, व्हेन वी सी हियर the 10 Kelvin increase also, from where we are increasing the 10 Kelvin from 298. So here when temperature increases from 298 to 300 Kelvin, then rate constant double. This is the information that is given in the question. ये आपको समझना पड़ेगा। अब उसके बाद we will apply the equation we have, log K2 upon K1 is equal to E upon 19.14 T2 minus T1 upon T1 minus T1 into T2. So T1 is 298, T2 is 308 because we have increased. K1 K is K1 और K1 जो है K है, K2 है 2K है। ठीक है, because K1 is K and when we increase the temperature it becomes double, तो K2 क्या हो जाएगा, twice of K हो जाएगा।
When you plug in the values and then once you solve it, you will get the answer of the EA activation energy as 52.702 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए log 2k अपॉन के कैंसिल हो जाएगा, log 2 मिल जाएगा आपको, इट इज इक्वल टू E अपॉन 19.14 इंटू 10 अपॉन 298 इंटू 308। EA जो होगा दिस विल गो दैट साइड 19.14 एंड दिस विल बी, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, द वन विच इज इन ब्रैकेट। So you'll have 0.3, that is the value of log 2 multiplied by 19.14 multiplied by 298 into 308 divided by 10. Once you solve this whole thing, you will get the answer as 52.702 kilojoule per mole. ठीक है, चलिए please copy this. This is an important question. इस तरह के सवाल आने की संभावना रहती है। Raise your hand once you're done writing this whole thing. Done. ठीक। there is last section. This sixth section is really from the integrated rate law expression and integrated rate law expression for reactions that involve gases only. ठीक है? So if we have a reaction in which we have only gaseous molecules, then for that we can have the integrated rate law expression in the terms of pressure only. थोड़ा सा इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है? This is important। और थोड़ा सा मतलब जो concepts है यहाँ पे, these are not the 12th standard typical concept। थोड़ा सा यहाँ पे आपके पास 11th class के concept है, ठीक है? So I hope this minus x plus x thing will, you can recognize these things from the equilibrium chapter, है ना? इक्विलिब्रियम में इस तरह से माइनस और प्लस हो रहा था। अब ध्यान से देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, है ना? नेचर ऑफ द क्वेश्चन वी विल आल्सो अंडरस्टैंड। जब इस तरह के सवाल पूछा जाता है तो किस पर्सपेक्टिव से सवाल पूछा जा रहा है उसको भी हम अच्छे से तरीके से समझेंगे। दिस इज समथिंग जहाँ पे सीखने का मौका है आपके पास, है ना? साइंस है ना, उसको सीखने का मौका है, थोड़ा सा उसको ध्यान से देखिएगा। सो वी हैव ए, बी एंड सी, ऑल ऑफ दीज आर गैसेस। आपने ए को कंटेनर में डाला, उसके बाद रिएक्शन होना शुरू हुआ एंड यू गेट बी एंड सी। बट यू डोंट रियली नो व्हेन द रिएक्शन इज एंडिंग, व्हेन द रिएक्शन इज कंप्लीटली, बिकॉज गैस आपको दिखेगी नहीं। The only thing that you can monitor is the pressure. The only thing that you can monitor is the pressure. अब इनिशियली जो प्रेशर होगा, आपने जैसे ही गैस ए को डाला, जिस भी प्रेशर से आपने गैस को डाला होगा, that will be the pressure of the gas A initially. Now the reaction will start happening. The gas A will start reacting. Some portion of A will react, and जैसे ही कुछ portion react होगा, A से जो amount है वो कम होगा. So pressure due to A will decrease from Pi. How much decrease? Minus x. What is x? We don't know, because you cannot see the gases, you cannot see the certain change what is happening there. So we take it as minus x. Some amount of A has reacted. जितना react किया होगा उतना B बनेगा और उतना ही C बनेगा. So you will get minus x, the A term, and the change for B will be plus x, and the change for C will be plus x. यहाँ पे समझ में आया? सुनो पीछे, are you guys with me? जी बताएं जी, are you guys with me?
Yes, sir. ठीक है, तो माइनस एक्स प्लस एक्स एंड प्लस एक्स, ठीक है. व्हेन द रिएक्शन इज कंप्लीटेड, कैसे पता चलेगा रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है? बिकॉज एज सुन एज यू हैव द गैस ए इन द कंटेनर, आपने उसी टाइम मैनोमीटर या बैरोमीटर लगा दिया, जिससे यू आर मॉनिटरिंग द प्रेशर. टिल द टाइम प्रेशर इज चेंजिंग, जब तक प्रेशर चेंज हो रहा है, दैट मींस रिएक्शन इज हैपनिंग. When the pressure stops changing, that means we will say equilibrium has been reached. There is no change happening right now. The equilibrium reach हो चुका है. So at equilibrium, what will happen? The pressure due to A will be Pi minus X, क्योंकि Pi तो इनिशियल प्रेशर था, उसमें से जो कुछ रिएक्ट हुआ होगा वो घटा दीजिए आप, तो Pi minus X हो जाएगा. The pressure due to B will be X because that much amount of B is made, and C will also be X because that much amount of C is made. अब ध्यान से सुनिएगा जरा. We can only measure the initial pressure which will be a constant and total pressure which will be a constant. बीच में तो सारी चीजें चेंज हो रही होंगी, कम हो रहा होगा, ज्यादा हो रहा होगा. We cannot really know what is the value of X. But what we can say, the total pressure at equilibrium, the total pressure when the reaction is completed at equilibrium will be, there will be some pressure due to the A gases, some pressure due to the B gases, some pressure due to the C gases. The pressure due to A at equilibrium is equal to how much? Pi minus X. Pressure due to B is equal to X. Pressure due to C is equal to also X. So the P total will be equal to the P initial plus X. ये हमारे पास क्या है? दिस इज अ फॉर्मूला. वी स्टिल डोंट नो व्हाट इज एक्स. ठीक है, तो एक्स हमको कैसे मिलेगा? एक्स बड़ी आसानी से मिल जाएगा. पी इनिशियल हमको पता है बिकॉज हमने ही गैस ए को डाला है. दैट इज वाई वी नो व्हाट इज द इनिशियल प्रेशर. एंड पी टोटल पता है बिकॉज वंस द प्रेशर स्टॉप्स चेंजिंग, वी कैन से दैट ओके रिएक्शन हैज बीन कंप्लीटेड, दिस इज द फाइनल प्रेशर. सो एक्स जो रिएक्टेड अमाउंट है, दैट विल बी इक्वल टू पी टोटल माइनस पी इनिशियल. So we have got the x. Now we can plug in the x जहां पे भी हमको जरूरत होगी. ठीक है. Now once we have got the x, अब हम लोग आते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन पे. हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है? फॉर वन ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर में ही सवाल आएगा ये. kt अपॉन 2.303 log a नॉट अपॉन a. दिस इज द फॉर्मूला वी हैव इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर. a नॉट जो है हमारे पास, दिस इज द इनिशियल, ये इनिशियल हो जाएगा, एंड दिस इज द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ए. तो इनिशियल जो था हमारे पास कितना था? पी आई, तो पी आई लिख दिया हमने. रिमेनिंग पी आई माइनस एक्स है, तो पी आई माइनस एक्स लिख दिया हमने. नाउ एवरीथिंग इज सेम. बस उसके बाद क्या किया हमने? लॉग पी आई अपॉन ये एक्स क्या होगा? एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट? देखिए यहाँ पे हमने लिखा है पी आई माइनस एक्स इज पी टी माइनस पी आई. जब माइनस साइन को खोलेंगे तो विल गेट पी आई माइनस पी टी प्लस पी आई. तो पी आई एंड पी आई विल एड अप, इट विल बिकम 2 पी आई माइनस पी टी. So we have got this particular formula for the it's chemical equations or chemical reactions that involve only gases, है ना? फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन दैट ओनली इन्वॉल्व गैसेस. तो उसके लिए जो हमारे पास रेट ऑफ एक्सप्रेशन है, दैट विल बी इन दिस फॉर्मेट kt अपॉन 2.303 log pi अपॉन 2 pi माइनस p2. ठीक है. अब एक सवाल है, इसको प्लीज कॉपी कर लीजिए जरा आप लोग. देन देयर इज वन क्वेश्चन दैट यू कैन डू. समझ में आया आप लोगों को? जी बताएं. Yes, sir. Yes, sir.
Just waiting for Krishna Priya. Raise your hand once you're done writing this. अच्छा एटलीस्ट ये, हाँ ठीक है, चलिए अब सवाल लिख लीजिए जरा. ठीक है, अब चलो चलिए सवाल कीजिए फिर. हाँ, you can do this question. It's not very tough. Initial pressure दिया हुआ है आप लोगों को. After 10 seconds, the pressure was found to be 0.6 atm. Calculate the rate constant for this reaction. फाइनल प्रेशर दिया हुआ है आपको, इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट निकालने के लिए कहा है. सो यू हैव गॉट पी आई, यू हैव गॉट पी टी, टाइम भी दिया हुआ है आप लोगों को. ठीक है, आई थिंक दिस इज जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन वही एटीएम और प्रेशर के फॉर्म में तो नया हो सकता था. अदरवाइज इट इज इजी, नॉट वेरी टफ. Send your answer on the Zoom chat once you're done. I have got one answer. चलिए देखते हैं. I think the calculation is also not very tough in this question. See here, so we have pi that is equal to 0.5 atm. P total is equal to
0.6 and time is 10 seconds. So kt upon 2.303 log pi upon 2 pi minus pt. K will be equal to 2.303 divided by 10, because 2.303 will go on the right hand side of the equation and to the numerator, and the time, which is 10 seconds, will go to the denominator. And then we have 2.303 log 5 by, अच्छा यहाँ पे 0.5 upon 1 minus 0.6, तो 0.5 upon 0.4 हो जाएगा, है ना? So one decimal place can be taken out, 5 by 4 हो जाएगा फिर ये. So I have directly written here log 5 by 4. ठीक है. Then we have here 2.303 divided by 10 is 0.2303 log 5 minus log 4. Log 5 is 0.7, log 4 is 0.6 into 0.1 will be 0.02303 सेकेंड इनवर्स. ठीक है. चलिए, आई थिंक 2 लोगों का आ गया. असलान, कहाँ तक पहुंचे आप? यस सर, मैं तो यहाँ 2.303/10 log 0.5 by 1 minus 0.6. यहाँ तक पहुंच गए थे आप? ठीक है, उसके बाद I कॉपी mean, कर मैंने लीजिए. 2 into 0.5 लिखा था, तो 2 हाँ इंटू वही नहीं, था. अच्छा ये, हाँ ये 2 into 1 हाँ हो हाँ जाएगा ना वो. ठीक है. हाँ हाँ वही सोच रहा था. ओके सर, डन. ठीक है. So I think that's the end of the chapter. Explain the term order of reaction, derive the units. तो चलिए ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है. ओके. अच्छा हाँ, ये एक डेरिवेशन वाला सवाल है जो कि आया हुआ था. derive the unit for first order rate constant. ठीक है. तो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट का जो डेरिवेशन है ना, यूनिट का, उसको देख लीजिएगा आप लोग. ये आ चुका है, तो मतलब एक बार देख लीजिएगा तो काफी होगा आप लोग के लिए. बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होगी. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उससे पहले हम लोगों ने जीरो ऑर्डर, एंड फ्रॉम हियर वी हैव आई थिंक